Good afternoon, student. Now we are going to see about interpreter. In our previous lecture, we have studied about various bare bones of Python programming language. Python program में we have studied about statement, comment, expression, function, block of code, and indentation. Now this is your homework question. I have given you. That's the difference between interpreter and compiler. Now I am going to explain function of interpreter. Now interpreter, you have heard about the interpreter, the compiler. Then now what is interpreter? Now we are going to see about interpreter. So interpreter is a language translator or language processor. You can say that interpreter is a translator, language translator or language processor that is used to convert high level language, HLL, that means high level language, into low level language. That means what is high level language? The language which is used by the user or programmer or developer. Suppose that if we are going to write a Python program. Now suppose that if we are going to write a program, suppose that a equal to 10, b equal to 20, and then print a plus b. This is called high level language because machine is not going to understand what is a, what is b, what is a plus b, what is the 10, 20, because machine is only going to understand 0 and 1. This is called binary language. Are you aware from this? Because machine, that means computer can understand only machine language, binary language, 0 and 1. Then how the machine is going to understand a and b, 10, 20, etc. So this is the called high level language, and this is called low level or machine level language. Now it converts and executes the code line by line. Second one is in case of interpreter is that interpreter is converting or executing one line at a time. Suppose we have right here 3 lines of code. Here we have written 3 lines of code, first, second and third. Then interpreter first read this line a equal to 10. Then it executes b equal to 20. Then again it execute print a plus b. If in the process of translating the language, if there is any error in any line, then interpreter not execute next line until the error is removed or rectified. Suppose that if there is any error in this line, then interpreter is not going to execute the next line. Suppose that now see working of interpreter. Suppose that this is interpreter, this is your interpreter, this is the high level language, and it converts low level language. This is the interpreter working as the interpreter works as the translator. Suppose that why to need translator? Because the user, here is the user, here is the machine. That means the user is not able to understand machine language and the machine is not able to understand high level language. Then how to communicate with the machine? Because machine is not going to understand high level language and programmer is not going to understand low level language. Suppose that if there are two persons, first person, second person, he knows English only,
he knows Hindi only. That means person 1 को हिंदी नहीं आती, person 2 को इंग्लिश नहीं आती. Then how they can communicate? Then they need a translator, a person as who can work as a translator if he know both हिंदी and इंग्लिश. अगर ये एक आदमी यहाँ बीच में हो जिसको हिंदी भी आती हो इंग्लिश भी आती हो, then they can establish communication between person 1 and person 2. Similarly, in case of computer and user, here is the one person or one device or one system required who know high level language and low level language both. This is called interpreter or compiler. Both functionality the same, interpreter and compiler. So here interpreter or compiler is going to convert high level language into low level language and low level language in high level language. This is the work or functionality of interpreter or compiler in the case of program execution and running of the program. I hope this is clear to you. Next one is, suppose that if we are going to write a program a equal to 10, b equal to 20, print a plus b. Now understand the working of the interpreter, how the interpreter is executing the code line by line. Now if interpreter reads first line of code a equal to 10, then it will be executed. This executed, that means it is converted into low level language. Then read b equal to 20, it is also executed because this statement is correct. This statement is correct. That means there is no error in first two statement or two lines of code. But when we are going to third line, here print में double t है. That means कि there is this function is not recognized by the interpreter because interpreter reads only print. इंटरप्रेटर को सिर्फ प्रिंट के बारे में पता है. ये प्रिंट टी डबल टी के साथ अगर कोई प्रिंट फंक्शन आएगा, देन इंटरप्रेटर इज नॉट गोइंग टू रिकॉग्नाइज इट. सो देयर इज अ एरर. अब इंटरप्रेटर क्या शो करेगा? एरर शो करेगा. देन द एरर इज डिस्प्ले टू द यूजर. प्रोग्रामर के पास एरर जाएगा. दिस एरर इज शोन एज सिंटेक्स एरर. नाउ this line is not going to be executed until and unless you are not going to rectify or remove this error. When you remove this error, that means when you delete this t, then this line is error free. That means error is removed, rectified. Now print a plus b. Now this will be executed. Now this line will be executed and output will be displayed as 30. Then output will be 30. This is the working of interpreter. Now let's see the working of compiler. Now compiler also converts high level language into low level language. It converts entire high level program in one go and report all errors at a time. That means compiler is not going to read one line at a time. Suppose that in case of previous program, if we have take the example of previous program, a equal to 10, b equal to 20, print a plus b. In this case, the compiler is not going to read a not b. Compiler converts these all code at a time. Compiler reads and execute all program at a time and report the all error. Here one error is found, compiler will convert the syntax error, generate syntax error, and when we have removed the error,
जैसे हम एरर को यहाँ पे रिमूव करेंगे, दिस विल एग्जीक्यूटेड एंड फाइनली दिस विल रिकम्पाइल एंड एग्जीक्यूटेड एंड output will be so output will be 30 will be displayed. This is the main difference of working in compiler and interpreter. कंपाइलर क्या कर रहा है, पूरे प्रोग्राम को एक ही बार में रीड करेगा, जिस जिस लाइन में एरर है उसको शो करेगा। देन आप क्या करेंगे, उसको फिर से एरर को रिमूव करेंगे और फिर से रिकम्पाइल करेगा प्रोग्राम को और आउटपुट जनरेट करेगा। इंटरप्रेटर क्या कर रहा है, रीड्स वन लाइन एट ए टाइम, एक लाइन को पढ़ेगा, उसको कन्वर्ट करेगा, फिर सेकेंड लाइन पढ़ेगा, फिर उसको कन्वर्ट करेगा। और अगर किसी लाइन में एरर आ गया है इंटरप्रेटर में, तो जब से वो फर्स्ट एरर रिमूव नहीं होगा, वो सेकेंड लाइन को एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा। बट इन द केस ऑफ कंपाइलर, इफ हियर एरर इन प्रिंट टी, नाउ ऑल द हियर सपोज दैट ए इक्वल टू 20, हम इस अगर कोई एरर यहाँ भी जनरेट कर दें, अगर 20 इक्वल टू बी कर दें, तो दिस इज नॉट द वैलिड सिंटैक्स टू डिक्लेयर वेरिएबल और डिफाइन वेरिएबल। तो ये ऐसा नहीं है कि इस लाइन पे नहीं आएगा कंपाइलर सारे कोड को पढ़ेगा, सारे कोड को रीड करेगा, जिस जिस कोड में एरर है वो शो करेगा, डिस्प्ले करेगा। सो दिस इज द मेन वर्किंग डिफरेंस ऑफ इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर। नाउ इफ वी आर गोइंग टू write a program, when we are going to write a program in any programming language, then we should understand the concept of variable. Now see, what is variable. Variable is a named label used to store value that can be processed during program run. Suppose that if we are going to store any value in our program, then you have to create or assign a variable to store that value. Now how to creating a variable, suppose that this is the variable name equal to Python, this is the variable, here name is the variable, name is variable and Python is value। Python क्या हमारा वेरिएबल नेम हो गया, अब Python क्या है हमारा वैल्यू, Python इज द वैल्यू टू द वेरिएबल, तो Python हमारा क्या हो गया वैल्यू। दिस इज द way to create the variable in Python. In our second variable version is the variable and 3.8 is the value to the variable. Now our first variable is string type variable. First is a string variable, yeah, variable type of string variable. In previous class we have studied about string literals, number literals, then I hope you are understanding the things. Second variable is our number variable or numeric type variable. This is your numeric or number type variable. That means first is string variable, second one is numeric variable. Now see, if we are going to create a variable in any other programming language like in C, C++, Java, .NET या any other, if we are going to define a variable in other programming language, then first we need to declare a variable. That means int a, that means a is the variable and int, that means it's defined the types of variable, that means int represent integer, the a is the variable of integer type, that means when we are going to assign the value to a equal to 20. Now in this case a is the type of integer variable, that means this is called declaration of variable, this is called declare here, declaration of variable, and this is the assignment to the variable, value assignment to variable. Now if we are going to write a equal to hello, this is incorrect because a is the type of integer variable. पहले ही हमने a को डिक्लेयर कर दिया है कि a इज द इंटीजर वेरिएबल,
ए हमारे इंटीजर वेरिएबल है, दैट मीन्स ए कैन हैव द इंटीजर टाइप ऑफ वैल्यू, नॉट स्ट्रिंग टाइप ऑफ वैल्यू. ए कैन नॉट कंटेन स्ट्रिंग टाइप ऑफ वैल्यू. एंड सेकेंड थिंग इज इफ जैसे ही हमने यहाँ पे int a लिखा, जैसे हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया वेरिएबल, इसके लिए स्टोरेज अगर int 2 बाइट ले ऑक्यूपाई कर रहा है तो 2 बाइट स्टोरेज मेमोरी में हमारे स्टोर हो गया, एलोकेट हो गया. जब भी वहाँ पे वैल्यू जाएगी 20 वहाँ पे स्टोर हो जाएगा. इन द केस ऑफ C++ जावा. बट नाउ सी व्हाट इज द इन केस ऑफ पाइथन. नाउ इन केस ऑफ पाइथन, वेरिएबल असाइनमेंट इन पाइथन, when first thing is no need to declare, no need to declare, no need to declare वेरिएबल. यहाँ पे डिक्लेयर करने की, वेरिएबल को वैल्यू डिक्लेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है. नो नीड टू डिक्लेयर द वैल्यू, फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग इज how to declare the variable in Python. Then just assign the value of the variable. If a equal to 20, this is the assignment of variable. Assignment of variable. If we are going to write b equal to Python, so b is the string type of variable. That means in Python there is no need to declare the variable, just assign the variable. Now until and unless if we are not going to assign any value to the variable, then variable is not created in Python. Python में वेरिएबल तभी क्रिएट होगा जब हम उसको कोई वैल्यू असाइन करेंगे. और दिस इज द फीचर्स ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कि एट ए टाइम ऑफ डिक्लेरेशन, अगर हम ए को है ए इक्वल टू 20 है, इफ वी कैन राइट ए इक्वल टू पाई, देन ए विल बी टाइप ऑफ स्ट्रिंग. ए इज़ द वेरिएबल ऑफ टाइप स्ट्रिंग. ए स्ट्रिंग की वैल्यू दे देंगे तो ए स्ट्रिंग टाइप हो जाएगा. अगर न्यूमेरिकल वैल्यू हम असाइन कर रहे हैं तो ए हमारा नंबर टाइप ऑफ वेरिएबल हो जाएगा. दैट मीन्स कि देयर इज़ नो फिक्स्ड टाइप ऑफ वेरिएबल, ओनली इट इज डिसाइडेड बाय द टाइम ऑफ असाइनमेंट ऑफ द वैल्यू टू द वेरिएबल. कोई भी वेरिएबल किस टाइप का है ये तभी पता चलेगा पाइथन में जब हम उसको कोई वैल्यू असाइन करेंगे. पहले से कुछ प्री फिक्स्ड नहीं है यहाँ पे. दिस इज द नाउ असाइनमेंट ऑफ द वेरिएबल इन पाइथन. जस्ट राइट द वेरिएबल एंड दैट वेरिएबल वैल्यू, दिस इज द असाइनमेंट ऑफ दैट इक्वल टू. अब वेरिएबल कर क्या रहा है पाइथन में, आर अदरवाइज इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर इन पाइथन, वेरिएबल इज जस्ट यूज टू स्टोर द वैल्यू. So I hope this is clear to you how to assign the variable. But here if in any other programming language, here if we write int a, if we have write int a, here memory is occupied. In any other programming language, when we are declare the variable memory is occupied, that means इस एक वेरिएबल के लिए इस ए वेरिएबल के लिए 2 बाइट हमारा रिजर्व हो गया मेमोरी में. बट इन केस ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, until and unless if we are not going to assign a value to the variable. अब यहाँ पे क्या है कि a की वैल्यू हमने असाइन नहीं किया है. a की वैल्यू क्या है हमें पता नहीं है. a क्या है, एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल है. फिर भी यहाँ पे मेमोरी हमारा क्या है, ऑक्यूपाइड हो गया है. यहाँ पे मेमोरी हमारा स्टोर हो गया, रिजर्व हो गया है a के लिए. बट इन केस ऑफ पाइथन
अगर हमने नहीं कहा कि a इक्वल टू 200, जब तक हम a की कोई वैल्यू असाइन नहीं करेंगे तब तक मेमोरी हमारा ऑक्यूपाइड नहीं होगा, तब तक हमारा मेमोरी जो है वो ऑक्यूपाइड नहीं होगा पाइथन में। दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड पाइथन इन वेरिएबल असाइनमेंट एंड डिक्लेयर। सो आई होप you have clear understanding of this thing now. In the next topic we are going to see about multiple assignment of the variable, and from Monday we are going to see the practical part of the program. That means we are going to write practically program, execute the program, then we are understanding the how to assign a variable and how to assign the multiple assignment to the variable. Now thank you for today.